कांग्रेस की 6 गारंटी स्कीमों को कानूनी दर्जा देने की मांग, केटीआर का बयान। तेलंगाना की सियासत में एक बार फिर कांग्रेस की गारंटी स्कीमों पर बहस तेज हो गई। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने 6 गारंटी स्कीमों को कानूनी दर्जा देने के मामले पर बड़ा बयान दिया। इन्होंने कहा कि कुछ लोगों को ये शुबा हो सकता है कि इन गारंटी स्कीमों को कानूनी हैसियत देने से आखिर फायदा क्या होगा, लेकिन हकीकत में इससे अवाम को सीधा और बड़ा फायदा मिलेगा। केटीआर ने मिसाल देते हुए कहा कि जिस तरह हाल ही में तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा था कि ट्रैफिक चालान की रकम सीधे बैंक अकाउंट से काट ली जाएगी, इसी तरह अगर गारंटी स्कीमों को कानूनी शक्ल दी जाती है तो अवाम को मिलने वाली रकम भी बराह रास्त इनके बैंक अकाउंट्स में जमा हो जाएगी। इन्होंने मजीद कहा कि इस सूरत में अवाम को ना सिर्फ दरख्वास्तें देने की ज़रूरत होगी, ना तो लाइन में खड़े होने की ज़रूरत होगी, ना ऑफिसर्स व चक्कर लगाने की ज़रूरत होगी और ना ही दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ेंगे। केटीआर के मुताबिक अगर किसी मुस्तहिक गरीब मिडिल क्लास शख्स को इसका हक ना मिले तो इसके पास कानूनी रास्ता मौजूद होगा और वो अदालत में जाकर हुकूमत के खिलाफ केस भी दर्ज कर सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एचएन न्यूज़। పరిస్థితి గవర్నమెంట్ కు ఆ అనివార్యత ఏర్పడుతుంది. అందుకే మేము మీ తరపున ఈ బిల్లు పెడతా ఉన్నాం. మీరు దరఖాస్తులు ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉండదు, దండాలు పెట్టవలసిన పని లేదు, ఇక అయ్యా అప్ప అని చెప్పి ఎవరిని బతిమలాడుకోవాల్సిన అవసరం కూడా ఉండదు. ఎట్లయితే ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ప్రభుత్వం విధిగా జీతాలు ఇస్తుందో చట్టం చేస్తే అట్లాగే మీకు 4000 రూపాయల పెన్షను, చట్టం చేస్తే అట్లాగే మీకు 2,500 మహిళలకి, 15,000 రైతులకి, అట్లాగే 5 లక్షల విద్యా భరోసా కార్డు విద్యార్థులకి మీకు వస్తుంది. చట్టం యొక్క ఉద్దేశం ఇది.